Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, Heron's formula. Now Heron's formula, this formula is given by the great mathematician Heron, and he has given this formula for finding the area of triangle, any type of triangle. Now why the need of this formula when we have already the formula for finding the area of triangle? Now what is the general formula for finding the area of triangle? That is half into base into height. Area of triangle, we all know, area of triangle equals to half into base into height. But where we can apply this formula? When we have a right angle triangle. If we have a right angle triangle, then only we can put this formula, then only we use this formula for finding the area of this triangle. Half into this one is our base and this is our height. 1/2 into base into height. So this formula is for right angle triangle. Now one more formula we have for finding the area of triangle, that is √3/4 into side square, or you can say √3/4 a square. Where we use this formula? In equilateral triangle. When we have an equilateral triangle. Equilateral triangle means a triangle in which all the sides are equal. Here we have a side A. So all sides will be A only. So this is our equilateral triangle. So our formula will be √3/4 a square. √3/4 into side square. Now if we have a triangle with different sides, if we have a triangle with different sides, here I am writing 5 centimeter, then 6 centimeter, then 7 centimeter. Now which formula you will put for finding the area of this triangle? This is not a right angle triangle because 90 degrees is not there. This is not an equilateral triangle because all the sides are different. Means this is an scalene triangle. So how you will find the area of this type of triangle? The Heron's formed a formula by which you can find the area of a scalene triangle or any type of triangle. That is, Heron's formula is √s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is semi-perimeter. Semi-perimeter means perimeter का half. S is semi-perimeter means इस triangle के perimeter का half. And A, B and C are the sides of triangle. A, B and C are the sides of triangle. So this is your Heron's formula, this one, for finding the area of any type of triangle. √s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is the semi-perimeter and a, b, c are the sides of triangle. Now if we have an isosceles triangle, this one, here I am writing the equal sides are 6 centimeter and 6 centimeter, and the unequal side is of 8 centimeter. Then how you will find the area of this type of triangle? Here what you can do, you can use the Heron's formula, or one more type, that is, first you will find the midpoint of this unequal side, then you can join it perpendicular. You can make a perpendicular here. Here this one is 90 degree. Now this is a right angle triangle in which the base is 4 centimeter. This one is the midpoint. Here I am writing ABC is the triangle and the midpoint is D. The midpoint is D and the unequal side is of 8 centimeter. Now this one A, B and D. ABD is a right angle triangle. Now how you will find
the area of right angle triangle, the formula is half into base into height. Now base already you have 4 centimeter and height you can find by Pythagoras theorem. The height here is AD and the base is BD. Half into BD into AD, and this AD you will find by Pythagoras theorem. And when you will find this AD, then easily you can put half into base into height in ABD and in ADC. Then the total of these both triangle will be the area of the triangle ABC. So like this we can find the area of isosceles triangle. So already we have two formulas for finding the area of triangle. One is half into base into height and other is root 3/4 into side square. And when we have isosceles triangle, in that situation you will find the height and find the area of both the triangles and then join it, add it. Then if we have a scalene triangle, the formula is for finding the area of triangle is S into S minus A into S minus B into S minus C. Now if I will give you one question that find the area of this triangle, that is a right angle triangle and where the base is 8 centimeter and height is 5 centimeter. Now you can find the area of this triangle by two methods. The first method is half into base into height because it is a right angle triangle, and the second method by this Heron's formula. By this formula also you can find the area of this triangle. If this hypotenuse is not given to you, you will find the hypotenuse first by Pythagoras theorem and then put the values in this formula. And otherwise, if the hypotenuse also is there, hypotenuse I am writing 10 centimeter, if the hypotenuse is also there, then also you can use this Heron's formula. So by two methods you can find the area of triangles. So the Heron, the great mathematician, given us one formula for finding the any type of triangle. We can use this formula in any type of triangle. Now I think all have understood this thing. Now we are starting our exercise number 12.1. Now exercise 12.1, question number 1 is a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? In this question, you have to find two things. First of all, you have a traffic signal board, on which it is written school ahead, and the signal board is of shape of the triangle, equilateral triangle with side A. Means आपके पास में एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है. Here you have a traffic signal board जो कि ट्राइंगल शेप का है, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड. नाउ विथ साइड A मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड A है, मीन्स ऑल साइड्स A होगी. इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. Now you have to find the area of the signal board using Heron's formula. Heron's formula use करके आपको इसका area find करना है, first thing. And the second thing, if its perimeter is 180 centimeter, अगर उसका perimeter, इस triangle का perimeter, इस signal board का perimeter आपको 180 centimeter given है, what will be the area of the signal board? The area of the signal board we have to find out in the numbers. Now first we will use Heron's formula for finding the area of this signal board. Now here we have side A. This is equilateral triangle. Now first of all, for Heron's formula you have to find out the semi perimeter.
perimeter means sum of all the side and semi perimeter means sum of all the sides divided by 2, means S equals to A plus B plus C upon 2. यहाँ पे आपका A B C are the sides of the triangle. यहाँ पे आपका A साइड A है, B साइड भी A है और C साइड भी A है, मीन्स आपका S क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस A अपॉन 2. तो S इक्वल्स टू 3A अपॉन 2. I think understood everyone. Now Heron's formula, area of triangle equals to under root S into S minus A into S minus B into S minus C. Now in this formula you will use this value, you will put these values. First of all, S is 3A upon 2. Then in the bracket S minus A means 3A upon 2 minus A. Then S minus B 3A upon 2 minus A, क्योंकि यहाँ पे हमारा B भी A है और C भी A है, तीनों चीजें हमारे पास में A ही है, minus A. And third thing S minus C, so again the same thing, I am writing downwards 3A upon 2 minus A. S into S minus A into S minus B into S minus C. Now we will solve this to find the area of triangle. Now here under root 3A upon 2 and in the bracket you will take the LCM. 2 will be the LCM, 3A minus 2A. Then here also 2 will be the LCM, 3A minus 2A. Again 2 will be the LCM, 3A minus 2A. Then square root 3A upon 2. And 3A minus 2A will be A upon 2. A upon 2. Here also A upon 2 and here also A upon 2. Now see. Here we have A upon 2 4 times. A upon 2 1 time. This 3 we are writing separately. Then A upon 2 second time, A upon 2 third time and A upon 2 fourth time. So 3 we are writing separately. Yeah, we can write this under root 3 into this A by 2 and this A by 2. ये 2 टाइम्स है, इसको जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा. तो वी कैन राइट हियर A by 2. देन दिस A by 2 एंड दिस A by 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको जब आप स्क्वायर रूट से बाहर लाओगे देन यहाँ पे हो जाएगा आपका A by 2. अब सिर्फ आपका स्क्वायर रूट में 3 बचा है, ओनली 3 you have in the square root. Now root 3 and 2 2s are 4. Root 3 upon 4 A square, which is the area of equilateral triangle. Remember I told you कि the area of equilateral triangle is under root 3 by 4 A square. Here we have in the signal board we have the side A. So this is an equilateral triangle. तो इसका area obviously क्या होगा, root 3 by 4 A square. But we have to solve it by Heron's formula. So this is our first answer. Now come to the second point. The second point, we have the perimeter of this equilateral triangle, this signal board. The perimeter of the signal board is 180 centimeter. 180 centimeter. Now perimeter of triangle, we have perimeter of triangle equals to 180 centimeter. Now we have the side A. The perimeter of triangle means क्या होता है, sum of all the side A plus A equals to 180. Then 3A equals to 180 and A will be 180 upon 3. Cancel it. 3 6 are. A equals to 60. Means we have the side of this signal board. Side of the signal board is 60 centimeter. Now what we have to find out, what will be the area of signal board. इस signal board का area बताना है. अब हमारे पास में side आ गई. अब area of equilateral triangle, अब
दोबारा हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो वी विल यूज दैट फॉर्मूला. तो साइड जब हमारे पास में आ जाएगी तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला. तो वी हैव द साइड 60 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. Area of the signal board equals to √3/4 a square. Side square means a square. Now √3/4 और a आपकी साइड है 60, तो 60 square. Now solve it. √3/4 and 60 square means 6 6 are 36 and सिंगल जीरो का बन जाएगा डबल जीरो, 3600. Now 4 9s are 36 0 0. Now this will be a 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया तो इसकी यूनिट आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगी. तो √3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि पॉइंट में √3 को हम ला रहे हैं और 900 से देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज इनफ कि 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. Now question number 2 is the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. एक फ्लाईओवर है जिसकी एक ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, उसकी साइड वॉल एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है. लाइक दिस इज योर फ्लाईओवर. फ्लाईओवर के नीचे जो आपका वॉल बनी हुई होती है दैट इज ऑफ ट्राइंगुलर शेप, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो रही है. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. उसकी walls की आपको side given है 120 meter here, 22 meter here and 122 meter here. Then the advertisement yield an earning of ₹5,000 per square meter per year. Advertisement की जो आपकी अर्निंग होती है एडवर्टाइजमेंट करने की वो ₹5,000 होती है पर स्क्वायर मीटर और पर ईयर. हर साल ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पे होता है. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल. जो आपका फ्लाईओवर की जो वन ट्राइंगुलर वॉल है वो एक कंपनी ने हायर की है फॉर 3 months. 3 months के लिए हायर की है. हाउ मच रेंट डिड ही पे. उसको ये इसका 3 months का कितना मनी पे करना पड़ेगा अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट, तो वी विल गेट द रेंट. तो हाउ वी विल फाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? आई थिंक दिस इज स्केलन ट्राइंगल बिकॉज ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. So when all the sides are different, so this is scalene triangle and we will find the area of this triangle by Heron's formula only. So here we have, first of all we have to find out the semi perimeter, that is S. So here we have A equals to 120 meter, B equals to 22 meter, anything you can write, and C equals to 122 meter. Then S equals to A plus B plus C upon 2. Then this will be 120 plus 22 plus 122 upon 2. This will be 264 upon 2. When you will cut it, you will get 132 meter. So this is your semi-perimeter S. Now, by the Heron's formula, we have area of triangle. Area of triangle equals to under root S into S minus A into S minus B into S minus C. Now square root of S we had 132, S minus A 132 minus 120, S minus B 132 minus B is our 22 and S minus C 132 minus C is our 122. Now solve it. 132 into 132 minus 120. This will be 10 into 132 minus 22.
this will be 110 into 132 minus, sorry, here we have 132 minus 120, 2 and 1, 12 into 110 into, here we have 10. Now how to solve this? Don't multiply all the numbers. The simple thing is solving this type of sum is you have to first of all find out the prime factorization of each and every number. How you will find? 132 के prime factors क्या होते हैं? You can find it 2 6 are 12 and 2 6 are 12. Then here 33. Then by table of 3, 11 and then 11. Means prime factor of 132 is 2 into 2 into 3 into 11. So instead of 132 you will write 2 into 2 into 3 into 11. Now prime factor of this 12. Prime factor of 12 are 3 4s are 12 and 4 के prime factor क्या होते हैं आपके 2 and 2. और आपको अगर वर्बल नहीं आता है तो you can do like this. 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3. So 2 into 2 into 3. Now prime factors of 110. 110 को you can write 11 into 10. 11 is already prime number और 10 को you can write 2 into 5. तो means prime factor of 110 will be 11 into 2 into 5 or you can write 2 into 5 into 11. अब बचा ये 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 5, 2 into 5. Now you will make the pairs. अब पेयर्स कैसे बनाने हैं? ये डबल टाइम 2, ये डबल टाइम 2, दिस 3 and this 3. तो ये डबल टाइम 2 को सिंगल टाइम 2 हो जाएगा, बाहर लाएंगे. ये डबल टाइम 2 का सिंगल टाइम 2, ये डबल टाइम 3 का सिंगल टाइम 3. देन ये 1 टाइम 11 एंड ये सेकेंड टाइम 11. तो ये 11 आ गया आपका बाहर. देन दिस 2 एंड दिस 2 पेयर हो गया. देन यू कैन राइट हियर 2 एंड दिस 5 एंड दिस 5 पेयर हो गया. तो ये 5 आप बाहर ला सकते हो. नाउ नथिंग इज रिमेनिंग इन स्क्वायर रूट. सबका पेयर बन गया. नाउ अब अगर किसी का पेयर नहीं बनता है तो यू कैन राइट दैट इन द स्क्वायर रूट ओनली. नाउ मल्टीप्लाई दिस. 2 2s are 4, 4 3s are 12. Here we have 12 into 11 into 2 5s are 10. Now 12 into 11 into 10. This will be 1320 square meter. So the area of that wall, the triangular wall, is 1320 square meter. Now after that what we have to do? We have to find out the rent. Now one line we have in the question, that is the advertisements yield an earning of rupees 5,000 per square meter per year. 5,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के पर ईयर लगते हैं. तो इसका मतलब बाय द यूनिटरी मेथड, क्योंकि हमको सिर्फ 3 मंथ का फाइंड करना है और पर ईयर मतलब क्या हो गया आपका 12 मंथ्स हो गया. तो 12 मंथ का गिवन है और 3 मंथ का फाइंड आउट करना है, तो यूनिटरी मेथड यू हैव टू यूज. तो व्हाट यू विल राइट, सिंस रेंट पेड बाय कंपनी इन 12 मंथ्स. अब 12 मंथ्स में कितने स्क्वायर मीटर के लिए रेंट पे कर रही है? फॉर 1 स्क्वायर मीटर. 5,000 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, रुपीज 5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. तो पर स्क्वायर मीटर मीन्स ये 1 स्क्वायर मीटर के लिए पे कर रही है एंड पर ईयर मीन्स 12 मंथ्स के लिए पे कर रही है. तो आपको ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है. तो रेंट पेड बाय कंपनी इन 12 मंथ्स फॉर 1 स्क्वायर मीटर इज रुपीज 5,000. देन सो रेंट पेड बाय कंपनी in 1 month
फॉर 1 स्क्वायर मीटर। 1 मंथ में कितना पे करेगी? 5000 अपॉन 12 रुपीज। देन अब आपके पास में टोटल मंथ्स कितने? 3 मंथ्स के लिए उसने हायर किया है कंपनी ने, तो रेंट पेड बाय कंपनी इन 3 मंथ्स फॉर, अब स्क्वायर मीटर कितने हैं आपके पास में? जो हमने एरिया फाइंड किया है 1320 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की जगह क्या आ जाएगा आपका? 1320 स्क्वायर मीटर। तो आई एम राइटिंग हियर 5000 अपॉन 12 तो ऑलरेडी वी हैव इन द सेकेंड लाइन, तो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1320, ये 3 मंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1320 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया था, तो 1320 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यू कैन सॉल्व दिस, 12 1 जा 12, देन 12 1 जा 12 एंड 0, देन मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15,000 इंटू 110, तो ये आपका आंसर आएगा 15,000 इंटू 110 इज, ये आएगा आपका आंसर ₹165,000 मीन्स 16,50,000। तो जो कंपनी है, रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर 3 months विल बी 16,50,000। दिस विल बी योर आंसर। मीन्स पहले आपको उस वॉल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है, देन आपको यूनिटरी मेथड से रेंट फाइंड आउट करना है। Now question number 3 is, there is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in color. पार्क में स्लाइड सबने देखी है, आई थिंक। स्लाइड के साइड में एक वॉल बनी हुई है, वो ब्लैंक नहीं है, उसमें वॉल बना दी तो वो ट्रायंगुलर वॉल बन गई। अब वो वॉल पेंटेड है और उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और उस वॉल का आपको साइड्स गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो वो वॉल जो पेंट की है उसका एरिया आपको फाइंड करना है कि कितना एरिया पेंट हुआ है। नाउ it is a scalene triangle because all the sides are different, 15, 11 and 6. So by the Heron's formula, I think now everyone can solve this. First of all, you will write the sides A, B and C. So here we have A equals to 15 meter, B equals to 11 meter and C equals to 6 meter. Now first of all you have to find S means semi perimeter equals to A plus B plus C upon 2. When you will do the work in copy, write the formula also, 15 plus 11 plus 6 upon 2. Now add them up, 5 and 1 6 and 6 12, carry 1 2 3 32 upon 2. When you will cancel this, you will get 16 meter. 16 meter is your semi perimeter S. Now use Heron's formula for finding the area painted. So area painted equals to under root S into S minus A into S minus B into S minus C. Our S is 16. So under root 16 into 16 minus A we have 15. 16 minus 15. Then S minus B means 16 minus 11 and S minus C means 16 minus 6. Now solve it. 16 into 16 minus 15 is 1, 16 minus 11 is 5 and 16 minus 6 is 10. Now what you will do, don't multiply the numbers, just find out the prime factorization of the numbers. Then स्क्वायर रूट, अब 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 4 जा 16 होता है और 4 का 2 2 जा 4 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। और अगर आपको नहीं आता है, यू कैन डू हियर इन रफ एंड देन राइट देयर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 का कुछ नहीं है, 1 को लीव 1 एंड देन 5 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर,
और 10 के क्या होते हैं, 10 के प्राइम फैक्टर जब आप करोगे यू विल गेट 2 into 5. नाउ मेक द पेयर्स. दिस वन फर्स्ट पेयर, दिस वन सेकंड पेयर, और ये 5 का आपका बन गया पेयर, इन दोनों 5 का मिला के, और 2 विल रिमेन इनसाइड ओनली क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बना. तो 1 टाइम 2, देन सेकंड पेयर का सेकंड टाइम 2, देन 5 का पेयर हुआ तो 5 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट में आपका रह गया √2. तो 2 2 ज़ा 4 and 4 5 ज़ा 20. तो योर आंसर विल बी द एरिया पेंटेड इज 20√2 square meter. This is your answer, 20√2 square meter. Now I think all have understood. This is very simple Heron's formula and scoring also. So do the work. I have given the PDF. So do in the assignment section. So do the work. Write the definitions which I have given. Write the formulas which I have given in PDF, and do the work in your copy. Thank you.